Note that if you get the option Sudan grass, it will be a wrong option. The bacteria which was proliferating in the flooded conditions, it will start dying. So this is the reason that why farmers are a little reluctant to adopt the direct seeding of rice. Biochar, if we see, how is it formed? इसका formation process क्या रहता है? हाँ, ठीक है. Biomass, its thermal degradation will be there at very high temperatures, 700 to say 1500 degrees Celsius, but in the absence of oxygen. And thereafter it's going to convert into some solid carbonaceous material which we say is your biochar. जैसे चारकोल होता है ना, चारकोल हमारे कोल से डिराइव करते हैं, बट हियर इट इज इक्विवेलेंट, वी विल से अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट द बायोचार प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोमास. ठीक है, so you can write down what are the biomass which you can use here. Generally the coconut husk, corn seeds, because these were there in the news also somewhere. These kind of options they frame and they ask us. ठीक है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर आपको दिखे वहां पे विच इज रेजिड्यू, याद रखिएगा इन सारी चीजों में ना, अगर आप सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल वाला कंसेप्ट याद रखते हो, लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास, दैट सेम कैन बी यूज्ड हियर आल्सो टू कन्वर्ट इट इनटू द बायोचार. Only the method is different. That conditions of temperature, the conditions of oxygen in which under controlled situations when we are converting it, the process will make whole difference. ठीक है, नहीं काउडंग आपका उसमें चला जाएगा. काउडंग से क्या बनता है? बायोगैस बनती है ना, वो बायोगैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर मीथेन इज देयर मोर. वी नीड हियर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टोर्ड फॉर्म में है एंड उसी को हमें कन्वर्ट करना है इनटू सॉलिड स्टेट. जस्ट अंडरस्टैंड, वी नीड सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन. दैट इज व्हाई वी नीड टू ensure that it undergoes the process of pyrolysis, and after pyrolysis we will obtain your biochar. Could you please type? I am not able to hear what you are saying. Okay. Yes, please type. Is it clear? So this is how your biochar will be formed. Remember, आपको ये याद रखना है कि pyrolysis main process है इसके लिए. ठीक है? And coming to its properties now, because it is rich in carbon, it has already sequestered the carbon. वही जो कार्बन यहाँ पे था उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, एंड ensuring that there are no emissions. ठीक है, so it is also your very good practice of carbon sequestration. But if we see in terms of the soil, it has proven to be very good additive. It can amend the properties of the soil when we add this, just like think it in terms of the manure. ठीक है, manure की तरह ही ये काम करेगा. When you spread it on the any crop, the land, there it's going to start giving it more nutrients. Yes, first thing that its area, the surface area of these pores, that's going to ऐसे pores समझिए. For example, microscopic level पे देखोगे तब समझ आता है. It will enhance the porosity of the soil. ठीक है, one, it's going to add to the porosity of the soil. It will make it more water retaining. Secondly, within these pores, it is also ensuring that it has sufficient space that carbon dioxide from the atmosphere, which is in exchange with the soil, that can be stored in these pores itself. Additional benefit, carbon sequestration. ठीक है,
If you want, I can dictate it to you. लिखा है मैंने उसमें. अच्छा, उस पे भी आएंगे. We'll come to that. It has just been established about a week ago. This was there. It was published in the Nature that biochar has also been found effective, that it can absorb, just like lime is absorbing the SO2. In similar manner, the biochar, it can absorb those heavy metals. They will stick, यानी कि stick हो जाएंगे उसके surface पे, and once they stick, it will not allow them to escape easily. इसी वजह से क्या होता है, it is ensuring that those chemicals, the bioaccumulative heavy metals, they do not get further transferred in the food chain. Lead, it has been found कि हाँ, lead, cadmium in सब cases में, in fact DDT में it has been found more effective. Recent finding, but if you have that option, you can mark it right. तो heavy metals जितने भी हैं उन सब में it has been found, it can potentially ensure that it's binding them, not allowing them to further pass on to accumulate in the tissues of the organisms. ठीक है? So in that way it's helping in preventing the bioaccumulation, biomagnification also. Pollution को भी control कर रहा है ये. ठीक है? And second thing, yes. हेवी मेटल्स वाला पानी अगर फिल्ट्रेशन भी हो जाएगी, देखो ये सब थ्योरेटिकल आइडियाज हैं. थ्योरेटिकली यू आर राइट, जैसे थ्योरेटिकल फिजिक्स होती है, but as of now we have not tested this, because when we test all these practices we have to take into consideration other variables also. Those need to be studied. This is the reason first field surveys, field pilot projects are carried on. After that, once it has proven the results, then we will start suggesting farmers कि ये भी करके देखो. तब तक नहीं हमें उनको बोलना कि रिस्क ले लो. ठीक है? यस, उसी के कॉन्सेप्ट पे है. बस टेस्ट इन्होंने अभी करा है कि चलो इसको भी करके देखते हैं, इज इट इफेक्टिव. सो इट हैज प्रूवन टू बी इफेक्टिव दैट इट कैन बाइंड टू द DDT and it will prevent its bioaccumulation. ठीक है? Well, coming back to the soil, कि soil के लिए कैसे beneficial है. Here if you see about biochar, there is one very interesting thing, that it is so stable form of carbon which is sequestered that it can store permanently it for hundreds or thousands of years. This is the reason that now scientists are pushing that make the farmers aware about this practice and try to incorporate it in the agriculture. ठीक है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारी लगभग 17-20% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है. सो समहाउ इफ वी आर एबल टू इंश्योर दिस अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट विल बी गुड फॉर द फार्मर्स ऑल्सो एंड द कंट्री एज वेल. ठीक है? इज इट क्लियर? एक आप ना ऐसे चार्ट बना लो ताकि आपको याद रहे all the benefits of biochar, and write here all the points which I am telling you, so that for your quick revision you retain this. One, source of nutrients, bracket में humus. Second, soil porosity improvement. Soil porosity improvement. Soil porosity improvement. Regulation of soil pH. Regulation of soil pH. Then you write increasing water holding capacity of soil. Cation exchange capacity of soil is increased. Yes, Giti.
You have the doubt that if we can use wheat and paddy stubble to make the biochar. Yes, it can also be converted. Any biomass which is having carbon in its structure, that can be converted into biomass, the biochar through pyrolysis. ठीक है? Have you written all of these? One thing said that it can do that also. Cation exchange में भी help करता है, ठीक है? But primarily from your point of view of regulation of acidity, ये याद रखिएगा. It is very good solution to correct the acidity of the soils because इसका basic nature जो है ना that is alkaline. ठीक है? By the virtue of its alkaline nature, it is useful in correcting the increasing acidity of the soil. ठीक है? So अभी तक जितना भी हमारा बायोचार के ऊपर आया है, we have tried to complete it here itself, summarized. Next is one very important topic, which is your biological nitrogen fixation. Now here you see this, how they are fixing, how they are able to fix the nitrogen. Legumes as the nitrogen fixers. How we can say that they are effective in fixing the nitrogen? नाइट्रोजन साइकिल याद है? वो मैंने इसलिए दी है आपको, वहां से ट्राई टू फाइंड आउट, दैट इज क्लू फॉर यू. तो उसको होस्ट कहाँ पे मिलेगा? हाँ, तो वहां से ही अब आइए, कौन सा पर्टिकुलर म्यूचुअलिज्म होता है, क्या बोलते हैं उसको? राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, यस. तो यहाँ पे याद रखना है वही आपको. इसका बेसिक जो है दैट इज दैट रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ऑफ द लेग्यूम्स, they will provide habitat for these special bacteria which are very effective in nitrogen fixation. ठीक है, तो उनका जो नाम है हमारा that is your rhizobium, and these are having this mutualistic relationship, symbiosis with your legumes. म्यूचुअलिस्टिक कैसे है? एक तो इनको घर मिल गया ना वहाँ रहने के लिए, बोथ आर बेनिफिटिंग. And after fixing the nitrogen, it's converting it into the form which plants can use. कौन से form में? Nitrates. Plants can extract, they are able to use nitrogen only when it's there in the nitrate form. So these bacteria, they will fix that and they will ensure the availability of free nitrogen to be used by these. ठीक है? Is it clear? Now, I said that there is one particular family which we need to remember. Write the name of that, the Fabaceae family. The Faber CAEA. CAEA. This is the name, sorry. Alternatively, it is called your pea family. Now note that in the pea family, apart from pea, we are having some other plants also. For example, you have your soya bean also here. Now note down all that list which will be under this family. One soya beans, peas. Yes, yes. वो उसका साइंटिफिक नेम है. साइंटिफिक नेम आपका ये रहा, लेकिन कॉमन नेम पी फैमिली बोल देते हैं. ठीक है, पी, सोयाबीन, बीन्स, क्लोवर, बीन्स, क्लोवर, लेंटिल्स, ल्यूपिन, lentils.
हाँ मेंशन है, अच्छा मैंने लिख दिया था, चलो फिर तो अच्छा है। आई थॉट मे बी आई फॉरगॉट टू मेंशन देयर। बहुत सारे हैं। अच्छा ठीक है, वो भी मैं आपको सारा वो दूंगी डिस्कशन भी, वेट। Okay, coming back here, if you see, try to remember all these names also whenever you come across these. Pea bean पता होता है, common veg will be there, then the green pea, chickpea, any kind of pea that will be part of that. Lentil, lupins, clover, alfalfa, ठीक है, soya bean, common bean, all of these they are part of this. And apart from this, there is one more plant which is called hairy vetch. Hairy vetch. And in fact, peanuts are also part of this. Peanuts. Now this we have seen that about legumes which are capable of nitrogen fixation. Similar way, like I said, we can use some grasses also. So remember grasses also. अब ये पूछ लिया है तो हो सकता है grasses पूछ ले, आगे तो वही बचता है हमारा, ठीक है? So let's write down what can be these grasses. Grasses as the nitrogen fixers. So here you write down examples. Dune grass, switch grass. On similar lines, once they have asked that which can be used in making the biofuel, है ना? हाँ. Alfalfa is considered grass, but अगर हमें पर्टिकुलर इसमें लेग्यूम में पूछा जाएगा तो वहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है? लेग्यूम्स में it can vary, it can be shrub also, it can be a tree also, it can be your grass also. But overall, if you see, that is the family which they belong to, ठीक है? This is separate. The separate family, they all belong to different set of families, but they have been proven to be effective in nitrogen fixation. Apart from this, we have clover also. Like here we have written a clover alfalfa. They will also fall here so that you remember. ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेना. ठीक है? Note that if you get the option Sudan grass, अगर ऑप्शन आता है ना कि सुडान ग्रास है कि नहीं, इट विल बी अ रॉन्ग ऑप्शन, याद रखिएगा. नेपियर ग्रास, ट्रॉपिकल टेम्परेट हम यहाँ नहीं वैसे पढ़ रहे हैं. Yes, it's there in biofuel. Biofuel के लिए आपका नेपियर ग्रास जो है उसी का नाम एलिफेंट ग्रास है, वो भी आपका बायोफ्यूल के लिए यूज होता है. एलिफेंट ग्रास इज योर नेपियर ग्रास. हाँ वो डिफरेंट है, वो इन्वेजिव उसमें आ जाएगा, इन्वेजन में. अगर यहाँ इनकॉर्पोरेट करते ना, इट विल स्टार्ट competing with the crop. So ensure whatever we are using here in integration with the crops, we have to remember one thing: it should not become invasive, otherwise it will turn into weed. Again we have to apply the weedicides, and again that same problem, chemicals are being overused, soil fertility is declining. तो वो साइकिल ही हमें ब्रेक करना है, ठीक है? Is it clear? So we have done this topic also. इसी से रिलेटेड अब दो कंसेप्ट्स और हैं, दे आर इंटरलिंक्ड. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में देखिए, इसको ना आप ताकि याद रखो, मैंने ये स्पेस इसलिए छोड़ा है. यू क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट, योर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. फर्स्ट वन इज देयर आर सम फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, and they can be very effective in nitrogen fixation. Again the concept same है, symbiosis with the roots of plants, ठीक है? And on the other side you write the mutualistic bacteria. Mutualistic bacteria. Now write down
Examples of these free living bacteria, the cyanobacteria, or we say alternatively blue green algae. ठीक है, that is your free living bacteria. Free living, it will not be in any kind of mutualistic relationship with the plant. Individually it is capable of fixing your nitrogen. ठीक है, और लिखिए एनेबिना, ये पूछा हुआ है इसीलिए ये मैं नाम लिखवा रही हूं आपको. ठीक है, सियानोबैक्टीरिया, एनेबिना, एनेबिना, नॉस्टॉक, एनेबिना, नॉस्टॉक, एज़ोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है. सो दीज आर ऑल हियर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक में आप लिखिए लिस्ट. एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, क्या था, राइजोबियम. उसके अलावा लिखिए एजोस्पाइरिलियम, and leave some space here so that we will write which crop will be associated, for which particular crop we can use it. These are majorly used for rice. They have been found very good in combination with rice. ठीक है, उधर मैं बताती हूँ आपको कौन सा किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं. एजोस्पाइरिलियम, then you write your Frankia. Next example is your Frankia. And then Azolla. Rice, they have asked us earlier. They might ask us about wheat and corn. These are widely cultivated also. So if they ask you about wheat and corn, which is suitable, so remember that Azospirillum will be your option. Wheat या फिर corn, दोनों के लिए effective रहेगा. ठीक है. Frankia in association with any non-legume crop, it is very flexible. तो ये कॉटन के साथ या किसी भी और क्रॉप के साथ भी हम इसको एसोसिएट करा सकते हैं. Now this property of these bacteria, since this has been studied by the researchers, so they try to prepare some inoculation out of this, using this in a powder. देखा है ना, कई बार बिकता है वो powder form में. If you supply that, actually that when you will be spraying it across your crop, it's going to proliferate the growth of these bacteria which are very good in nitrogen fixation. ठीक है, that is only your concept of your biofertilizers. These are containing the live specimens of the beneficial bacteria which will help in restoring the nitrogen, and they also have additional benefit that the phosphate in the soil, it will be made more soluble so that plants can easily absorb it. ठीक है, और उसके अलावा आपके फाइटो हॉर्मोन्स की ग्रोथ, उसकी रिलीज को सपोर्ट करता है ये. ठीक है, so there are 3 benefits of using the biofertilizers. Is it clear? Biofertilizers, I think this is also asked once. These are some of the initiatives regarding your carbon farming. This was in Limelight, 4 per 1000 initiative. 4 per 1000 if you see. UNFCCC, उसका लीमा एंड पेरिस एक्शन एजेंडा यानी कि COP20 and subsequently followed by COP21. Collectively, they have called for forming one association, voluntary partnership, where countries, these
farmer organizations, the civil society organizations, the private companies, means all the stakeholders. So what is it? It is multi-stakeholder kind of organization, providing voluntary platform for collaboration between these partners so that they can work towards the carbon farming or regenerative farming. उसके regarding awareness, projects, training, capacity building, all of these they will design and implement. ठीक है, ये काम रहता है हमारा 4/1000. 4/1000 से ही याद रखिए कि 4 आप इसको कन्वर्ट करोगे अगर तो ये कितना बनेगा, मीन्स एनुअली 0.4% restoration of the soil organic carbon should be there. This is their target. 4/1000 is name of the target. ठीक है, is it clear? Annual basis target. Next is your global soil partnership. Now global soil partnership, remember that it is your initiative of FAO, Food and Agriculture Organization, यानी कि UN led initiative है. अगर ये इसी तरीके से आपके indirect options बनते हैं, हो सकता है डायरेक्ट भी पूछ ले या फिर इनडायरेक्टली पूछेंगे, तो दिस इज हाउ दे विल फ्रेम इट. इट इज UN led initiative. Now here also on similar lines, the purpose is to improve the soil management, and for soil management it has to work on the water management, the pest management, carbon emissions control. All of these will be the objectives upon which these projects will be implemented. Again, this is your voluntary organization, and remember when it was formed in the year 2012. 2012 के बाद ये फॉर्म हुआ था हमारा. नेक्स्ट इज योर स्कीम. दिस इज इंडियन गवर्नमेंट स्कीम and I think you all know about this. The states which are promoting biofertilizers, they will be given incentive by the central government. So that is basically, whenever you write in the mains also, remember all these initiatives you can include in your answer. प्री में आए तो आपको ऑप्शंस याद रखने हैं कि किसका इनिशिएटिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो हियर वन थिंग वी हैव सीन दैट नन ऑफ दीज इज कंप्लीटली इंटरगवर्नमेंटल इन नेचर. दे आर ऑल मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, one of the schemes of the government of India. Why I have given this? Because from these schemes on individual basis they have asked the questions, and we have discussed some of these concepts. Like it is promoting direct seeded rice, वो हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, and efficient irrigation system, यानी कि स्प्रिंकलर या फिर आपका ड्रिप इरिगेशन. तो इसके लिए कौन सा मिशन है हमारा? हाँ, वो किसका है? वो तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया. हाँ, हर खेत को पानी, सबको याद है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, तो उसके लिए सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, दैट यू इंस्टॉल दिस सिस्टम एंड स्टार्ट अवॉइडिंग द फ्लड इरिगेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज योर जीरो टिल प्लांटिंग ऑफ व्हीट. नाउ फ्रॉम दिस ऑप्शन इटसेल्फ, इफ यू वर अवेयर, one of the statements that year which was asked, it was easily eliminated. इसको ही expand करके बना दिया था. If zero tilled farming is incorporated, wheat cultivation can be followed. कि zero tilled farm पे wheat cultivation कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन था. अगर आपको इसका ये वर्टिकल भी याद होता ना तो आप easily मार्क कर देते. So pay attention to whatever components of that particular scheme are. It will just help us in eliminating the options. एक बार पढ़ लोगे कहीं ना कहीं याद आ जाएगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ऑब्वियसली टू एंश्योर दैट सॉइल हेल्थ इज मेंटेन्ड, वी हैव टू कैरी आउट द टेस्टिंग ऑफ द सॉइल ऑल्सो. सो हियर द सॉइल हेल्थ कार्ड बेस्ड, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो हमने बाद में लॉन्च करी है, इट इज हैविंग इट्स जेनेसिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ठीक है, उसके बाद crop residue recycling. It means here it's emphasizing again on your zero tillage. Green manuring जो हमने अभी पढ़ लिया है, cover crops and all, वो वाला concept आपका यहाँ से, क्योंकि अभी नहीं पूछा तो हो सकता पूछ ले, और अभी काफ़ी सारे articles आ रहे हैं फ्रंट लाइन द हिंदू में इसके ऊपर. ठीक है, next is your agroforestry.
we have already covered this, ठीक है. So all of these यानी कि it is encompassing wide range of the good practices in terms of agriculture, and it's promoting research, it's promoting the awareness among the farmers. उसके लिए demonstration centers establish करो, and agricultural universities के साथ engage करते हैं, because particularly they have to carry out the research, ठीक है. So all those, after developing those technologies, they should reach the farmers. This is how these schemes work, ठीक है. Is it clear? So we'll study about one of the very important methods here regarding your rice cultivation. Like I said earlier, that paddy, it's concerning in terms of water also and the methane emissions also. Now for these both problems can be solved if we follow the practice of alternate wetting and drying. देखो इसमें होता क्या है. Simply suppose you have your farm, ठीक है. In between there will be some pipes, porous pipes, perforated pipes will be there. Don't imagine it's on the ground, it's beneath the ground, ठीक है. So they will be at some space, they will be installed in that particular crop, ठीक है. And there will be this irrigation, but not on regular basis. It will be controlled. यानी कि एक टाइम पे, suppose in the first round of irrigation is complete, and now it will be allowed to dry rather than reflooding it immediately. Generally क्या होता है, राइस कल्टीवेशन में लगातार पानी भर के रखते हैं, ठीक है. बट इंस्टेड ऑफ दैट हियर वी आर गोइंग टू अलाउ इट टू गो टू सम लेवल डाउन. अब कितना लेवल वो नीचे जाना चाहिए? रिमेंबर, इफ इट रीचेस 15 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स इन द सॉइल, दैट विल बी मेजर्ड. इट्स अ साइंटिफिक प्रैक्टिस. तो उसमें फार्मर्स को ट्रेन किया जाता है हाउ यू विल चेक इट, ठीक है. So from these pipes they are going to measure कि पानी कितनी नीचे जा चुका है, and as soon as the level touches 15 centimeters beneath, again it's time to irrigate it. यानी कि you have given it time that the bacteria which was proliferating in the flooded conditions, it will start dying. Methanogens खत्म हो गए, यानी कि कुछ टाइम के लिए हमारी emissions कम हो गई हैं. So what we are doing here, alternatively we are allowing it to flood and accordingly dry. So this is what alternate wet and drying is. Easy? याद रहेगा भी ये. तो इसके दो फायदे हैं. One, the water use efficiency will improve. Secondly, it's going to bring down the methane emissions from the paddy cultivation. Is it clear? Next is your, again फ्रॉम द राइस कल्टिवेशन सस्टेनेबल फार्मिंग का दूसरा मेथड है हमारा डायरेक्ट सीडेड राइस. ये आपका आर्टिकल द हिंदू से ही है, दिस होल. नाउ सी, डायरेक्ट सीडेड ऑफ राइस का मतलब क्या होता है? टू डिस्टिंग्विश दिस, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कन्वेंशनल मेथड विच इज फॉलोड. कन्वेंशनल मेथड इज, देयर विल बी योर puddled transplantation method. This is your puddled transplantation. This is the conventional practice which is followed. What happens in this? First, a nursery will be made, ठीक है. So on that nursery, we are going to allow the germination of the seeds for a month or so when it's grown to some level. After that, we are going to uproot it from there and we will plant it further. यानी कि transplantation करेंगे. First we are cultivating here, thereafter we will grow it on the main field. ठीक है. अब होता क्या है इसमें? पहली चीज, one that in this process ना lot of water gets consumed, and secondly lot of labor is also required in both of these. So it's labor intensive as well as water intensive, and in that process obviously it's going to emit lot of methane, ठीक है. So the alternative is, why don't we directly seed the rices?
So this process will be eliminated. Means no maintenance of the nursery is required in case of direct seeded rice. तो आप पहले लिख लीजिए डायरेक्ट सीडेड राइस के बारे में, ठीक है. The first point you have to write, it is also known as the broadcasting method. It is also known as the broadcasting method of rice cultivation. The precondition for maintenance of nursery is eliminated in the process. There is no requirement for the pre-germinated seeds. The seeds can be directly sown. Onto the field using seed drillers. It is more mechanical. इतना याद रखना है, ठीक है. इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है इस मेथड की. दिस इज द नेगेटिव ऑफ दैट. Cultivation of rice through this method is also possible on the reduced tilled field. The cultivation of rice in this method is also possible and hence more profitable if planted on the reduced tilled land. यानी कि crop residue of earlier crop is left up to 30%. It's advisable that always leave 30% of the residue of previous crop. And thereafter, in this method, in direct seeded rice, important thing is that we need very leveled field. This is also essential condition. ठीक है? That it requires the land to be completely leveled. इसी में डायरेक्ट सीडेड का ये सारा. ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, यहाँ पे नर्सरी ये खत्म कर दिया, हम डायरेक्टली जो कर रहे हैं फील्ड पे कर रहे हैं, ठीक है. And because we are incorporating the crop residues of earlier, so that will also help in increasing the porosity of the soil and enhancing its water retention capacity. So that is the reason it will help in bringing down the water requirements. So irrigation needs to some extent that will be lesser as compared to your conventional method of rice cultivation. Is it clear? Generally, the short duration varieties adaptive under aerobic conditions are more suitable for direct seeding of rice. For example, Kala Namak. Yes, it is having GI tag also. अब इसके negatives लिख लो. Now see, when we are allowing the direct seeding, one of the major flaws is we will not be able to control the weeds. So weeds are going to grow simultaneously along with the crop. So the need for herbicide will also be more in this case. So what are the negatives? The weed growth. Second, the need for more chemical based herbicides. In fact, before cultivation also we need to apply herbicide, and during the cultivation also, in between we have to spray the herbicide. ठीक है, इसलिए केमिकल का यूज कहीं ना कहीं फिर से ज्यादा हो रहा है. So that is your negative aspect.
yield initially कम होता है इसमें. Obviously it will be there less because बोला जाता है ऐसा, but some people, this is actually a controversial. Some say that it is effective if you practice for some longer duration. Initially soil is not adaptive to these conditions. ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें ये भी चेक कर पाते हैं जो कौन सा जो अभी अप्रूव करके ले जा रहे हैं वो ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं, बट उसमें नहीं पता कर पाएंगे. उसमें तो वी आर लीविंग इट टू नेचर ना, कि ठीक है भाई देख लो, हो गया तो हो गया. तो अगर आंधी आया तूफान आया, सो इट विल बी इजीली फ्लैटेंड ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक. The root anchorage is weak. Write down there in the negatives that root anchorage of direct seeded rice is poor. Hence, it is more prone to vagaries of weather, like heavy rain. ठीक है? So ultimately, what will happen? It's going to affect the yield of that crop. So this is the reason that why farmers are a little reluctant to adopt the direct seeding of rice. ठीक है? Next is your natural farming. However, yes, note this thing. You can underline here itself. In the DSR method, crops will typically mature much faster. This is a positive aspect. So if you get this statement, it will be correct. ठीक है? तो जो भी आपको एक्सट्रैक्ट्स दिए होंगे ना नोट्स में, उनको एक बारी पढ़ के जाना है. They are somewhere, they are important and it's between, we say ना, read between the lines from the newspaper. वो वाला चीज़ है. We miss out those points and that is from where questions are picked. ठीक है? Next thing, our very important topic, which is your natural farming. How many of you understand the zero budget natural farming? आप सारा पढ़ के आए हो? Very nice. अच्छा, okay, okay, nice. कैसा गया? Okay. Anybody try to make a guess? We are learning through these classes, so feel. अच्छा, तो फिर ऑर्गेनिक और नेचुरल हमने नाम क्यों अलग दे दिया है? ऑर्गेनिक मेथड इज लाइक काइंड ऑफ बिल्कुल ट्रेडिशनल नेचुरल वे में ग्रोथ होगा और लेस ह्यूमन इंटरेक्शन. So basically here, because in organic agriculture, while we are incorporating the practices which we studied earlier, along with that, na, we are free to incorporate in between, if needed, the chemical fertilizers also, and in fact biofertilizers are widely used in organic farming, but that is completely prohibited in case of your natural farming. Here we will prepare the bio-inoculant of the microbes, and how that will be prepared using your cow dung, cow urine, the jaggery, the things which are available at home. Purpose is to reduce the cost of farming. तो इसके लिए ना जो भी घर पे अवेलेबल होगा फार्म एरिया पे, विद इन द रूरल एरियाज, those resources will only be directly used, and in fact in fermentation process, this whole will be mixed, it will be maintained for 2 days, and thereafter it's ready to be sprayed in the field, and after that you can do your transplantation and crop cultivation. ठीक है? So what happens here, you can write that mixture so that you remember these terms. They are derived from, जो यहाँ पे आपको terms दिए ना, इनको याद नहीं रखना पड़ेगा. फिर जीव अमृत क्या होता है, we will understand this. What is जीव अमृत, what is घन जीव अमृत, and why these two are different. क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये दोनों सेम है. For the first time when I read, in fact it seemed to me also, दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, फर्क क्या है दोनों में. One is the process, second is the outcome. ठीक है? ये वाला, this is your process and this is the outcome. Try to remember in this way. Then रोग नाशी दवा, कीटनाश अस्त्र, means here we are trying to use the leaves of some plants, the oils of some plants only as the pesticide. So neem oil, neem leaves, the garlic, chili, these all will be used in, yes, they will be incorporated here
It means this is why we do not require at all the pesticides and insecticides. There will be no pesticides, no use of the insecticides also. कुछ नहीं खरीदना, जो है उसी का यूज करना है. Yes, this is why it will be zero budget. ठीक है. We'll come to okay, last one we have done this. Mulching को incorporate करना है because it will naturally prepare your manure. Your humus content will improve. ठीक है. तो इसको बस याद रखो कि mulching is also important component practice of your natural farming. Apart from this, we'll see how these two, because यही essential है. सबसे ज़्यादा important चीज़ जिसकी शुरुआत इस क्रॉप में होती है ना, क्रॉपिंग की, that is your how we prepare the जीव अमृत and then further facilitate the घन जीव अमृत. ठीक है. So if you see here, तो इसमें क्या करते हैं, they will take some amount of water, it will be mixed with the jaggery. There are some proportions which are prescribed, farmers are made aware of that. ठीक है. And apart from that, the pulse flour will be there, जैसे कि दाल का आटा. ठीक है. That can be mixed. Apart from that, the cow urine and the cow dung. These all will be mixed in one proportion, and along with this, some of the old uncontaminated soil will also be mixed. Some old uncontaminated soil. Now this will be mixed in some specific prescribed desired proportion. ठीक है. And it will be allowed to rest for 2 days or 3 days so that it creates the natural environment for the microorganisms and worms to start thriving. ठीक है. अब जब वो हो गया ना, when it's complete, यानी कि इन सबको मिक्स करने के बाद when it's left, it will naturally undergo the process of fermentation, and hence we are ready with the bio-inoculant. So this is what is your first vertical. क्या था हमारा फर्स्ट वाला? जीव अमृत. ये जीव के लिए अमृत का काम कर रहा है. कौन से जीव? सॉइल बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. नाउ द सेकेंड स्टेप, द घन जीव अमृत. दिस it will be prepared in the form of liquid only. It will be in liquid form so that it can be sprayed just like the other chemicals which we spray in the crops. ठीक है. तो इसको क्या करेंगे? स्प्रे कर देंगे फील्ड के ऊपर. ठीक है. And now when it's there mixing with the already available soil there, it's going to become part of that, and further growth of the soil biodiversity will increase. यानी कि घन जीव अमृत घना हो गया है. ठीक है. It's denser growth of, it will facilitate the wider, the denser growth of your soil, microbes and worms. So earthworms and all, naturally they will become part of that soil biota. ठीक है. And in very natural process they will start replenishing, adding to the fertility of the soil. Nutrients को enrich करना start कर देंगे. ठीक है. And when after that this field is ready that you can cultivate any crop. In between, when we need to control the weeds, the pest or the insects, then we will use your रोगनाशक दवाई. ठीक है. समझ गए? एकदम ही घरेलू मेथड है ये. कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना. दिस इज द रीजन दे आर promoting it, so that the small farmers in India, we are largely having more than 86% are small and marginal farmers, taking care of their welfare, ensuring that they do not have to go for much mechanization, and also taking into consideration the climate change and future of India. We have to ultimately start connecting back with our roots. In fact, ये कुछ नया नहीं है, बस हम rejuvenate कर रहे हैं हमारी older practices को. Yes, and here the cow which is suggested to be used, now that is also indigenous cow. Instead of using the hybrid cows, for it's stressed specifically that you should use the urine and cow dung of indigenous cows, because it has been studied by the researchers of India that they are more effective in preparing this and facilitating the conditions which are good for our soils.
ठीक है, इज इट क्लियर? दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. सो हियर इट्स गोइंग टू बी घन जीवामृत. समझ में आ गया? दिस इज योर नेचुरल फार्मिंग. पहले इसका नाम दूसरा था, क्या बोलते थे इसको? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. It was already practiced a lot in South India. Karnataka, you have seen that it made its humble beginning from Karnataka, Andhra Pradesh. Later it start the other states in North India also now there. Eventually they are open to. हाँ. अच्छा. हाँ वो बनाते हैं, तो कंपोस्ट भी घर पे बनाते हैं अभी भी. किचन वेस्ट ऑल्सो. They have that knowledge. This is why traditional knowledge is important, even for the future of India. Conserving the complex. नहीं. In fact, ये easy है. I have also seen how it's prepared earlier. I didn't know. I visited once and I asked that you tell me that how it's prepared. Show me. बिल्कुल ज़्यादा प्रपोर्शन एवरीथिंग ज़्यादा पड़ गया तो भी सड़ जाएगा क्रॉप आपका. यस, दे विल स्टार्ट टर्निंग येलो एंड लीव्स विल फॉल ऑफ. तो बहुत सारी चीज़ों का. तो दिस इज वेरी नेचुरल वे ऑफ रेजिंग योर क्रॉप्स. ठीक है, तो यही है आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि नेचुरल फार्मिंग. एंड फ्रॉम the schemes, if you see, I have listed that here. You can read all the verticals and the differences between the organic and natural farming. ठीक है, और यहाँ पे कोशिश रहती है we have to ensure that we use only indigenous and the local varieties of the seeds. Hybrid varieties are not allowed. Hybrid can be part of your organic. They are not part of the natural. Now this list, it's there from the government site itself. So before exam you go through it once. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ही है ये हमारा, तो इसको एक बार अच्छे से देख के जाना. एंड लार्जली हियर इंस्टेड ऑफ मोनोक्रॉपिंग इट्स सजेस्टेड दैट अडॉप्ट योर मिक्स, यानी कि इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, वो सब इसी का पार्ट होंगे. ठीक है, ऑल्दो दैट कैन बी कॉमन ऑल्सो इन दिस, दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑल्सो. लार्जली व्हाट इज द डिफरेंस? द यूज ऑफ natural products or the chemicals. That is what is distinguishing these two. ठीक है, बाकी सारे practices almost similar हो सकते हैं. Is it clear? And biological management of pest क्या होता है? Now this is also important to know. When they are saying that rely on the biological methods of pest control, what does it mean? Again, now this is how you connect your NCERTs. वहाँ पे parasitism पढ़ा था. इस बारी क्या आया था? पैरासिटॉइड्स. पैरासिटॉइड्स में वी नो दैट वास्प, दैट इज वन स्पीशीज विच इज नोन फॉर इट्स पैरासिटॉइड बिहेवियर. सिमिलरली वी हैव अदर स्पीशीज ऑल्सो विच आर पैरासिटॉइड इन नेचर. मीन्स पैरासिटॉइड का मतलब क्या होता है? दे कैन एंटर द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड दे विल lay their eggs there and they will allow their young one to grow within the reproductive system of some host. उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब ये हुआ था कि वो क्या बोलते हैं, मतलब वो फूड्स नहीं है, एक तरह से क्या बोलते हैं, जो इवन जो ब्राह्मण्स हैं ना उनको कंज्यूम नहीं करते. हाँ, क्योंकि वो तो जैनी दे गिव दिस आर्ग्यूमेंट कि उसमें अंदर से फर्टिलाइज कर रहा है ये. हाँ, तो वेल दैट इज सेपरेट डिबेट. ठीक है, so the parasitoid, what it happens that the parasitoid animal, the organisms, generally these are the insects only, they tend to invade the body of its host. They will lay their eggs there. They will not themselves go there, they'll just lay their eggs, and after that it will allow its young one to grow within that. And as its young one is further growing, when it's big enough, the host is going to die, because first its immunity, it's attacking it from inside. इसीलिए पैरासाइट का टाइप है ये. इट इज अ टाइप ऑफ पैरासाइटिज्म. ठीक है, सो इट्स ईटिंग दैट, इट्स एक्सट्रेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट, एंड इवेंचुअली इट विल कॉज द डेथ ऑफ
दैट पर्टिकुलर होस्ट, और ये सही सलामत बाहर। ठीक है, तो यही आइडिया है दैट इन बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट साइंटिस्ट रिसर्चर्स दे आर प्रमोटिंग दैट farmers should be made aware how to use these species for natural control of the pest. मैम रिसेंटली अभी थीसिस को भी यूज किया गया था, जो पैडी का फील्ड है जैसे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में, जो पैडी के फील्ड में ना फिश को रखा जाता था, जो भी वहाँ पे पेस्ट होते थे, पेस्ट वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपका आएगा फिश एंड, क्योंकि फिश का जो वेस्ट होता है that is rich in nitrogen, it will supply the natural nitrogen to the fish. Integrated farming बोलते हैं उसको. बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में वो भी है, Yes. फिश भी काम कर रहा है पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा आपका the fish, and you can integrate this, the fish and your paddy cultivation. So any predator kind of species or any parasitoid kind of species in controlled environment, they will be allowed to be released, and through that whatever pest is there, उनका population खत्म हो जाएगा and we will get rid of that. So largely it is suggested to be practiced under your organic farming, but in natural farming as of now we do not have any such practices. It's largely based upon using the leaves or the plant extracts. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर देखा जाए तो ये लार्ज लेवल में पॉसिबल है, स्मॉल लेवल मतलब नेचुरल फार्मिंग जो है वो लार्ज लेवल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, commercial level पे थोड़ा difficult है because in commercial farming largely you see these tea or the spices cultivation, it's monocropping. नेचुरल फार्मिंग में ज़्यादा होम बेस्ड होता है, होम बेस्ड ही मोस्टली यूज करते हैं, लार्ज लेवल में होते ही तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो इसका फोकस भी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा है, and the farmers who are having this profit oriented mindset, they will be reluctant to adopt this. That is, these kind of arguments, they're good for your mains or for your interview. ये बस फेंकने के लिए। ठीक है, is it clear? So next is your key features of your national mission on natural farming. Should I read it for you? You can study on your own. पढ़ लेंगे ना? ठीक है, ये तो याद, और वही पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज योर एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल एंड द प्रॉब्लम. इनफैक्ट इसको ना ऐसे लिखो सो दैट यू रिमेंबर. राइट डाउन हियर द प्रॉब्लम सॉइल्स, and this is the name given by our government itself only, Ministry of Agriculture. It's problem soils बोलता है इसको. ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉइल्स में हाउ इट इज कैटेगराइजिंग, विल स्टडी अकॉर्डिंगली. सी बिटवीन द pH 6 to 5 and 7 to 5 वी हैव न्यूट्रल सॉइल. कैसा सॉइल है? न्यूट्रल. pH इज न्यूट्रल. 7.5, दिस इज एक्चुअली अ pH वैल्यू. And if the pH will be less than 6.5, that will be your acidic soil. ठीक है, acidic soil. And more than 7.5, that will be your basic, या फिर जिसको बोलते हैं sodic soils. Alternatively it is said sodic soil. ठीक है, हाँ, तो इसको याद करने का तरीका देखो, एग्जाम में हमें याद करने से मतलब है. ठीक है, यस. ठीक है, तो अब नाउ whenever pH is decreasing or it's increasing, in either case the soil will start losing its fertility, it will become less suitable for agriculture. दोनों केसेस में. Now we need to resolve this problem. बाकी देखते हैं कि acidic soil में और क्या प्रॉब्लम होती है. So note down these first. According to Government of India, acidic soil, it is majorly a problem in most of the states except, according to Government of India. इसी के नीचे लिखना, जो इसका पॉइंट है इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, ताकि आपको एक ही जगह पे दोनों याद रहे. ठीक है, according to Government of India, the problem of acidic soils is prominent in most of the states except for the states of Gujarat, Punjab,
राजस्थान and Uttar Pradesh and Uttar Pradesh. राजस्थान, गुजरात, पंजाब, क्योंकि वहाँ पे हमारा बाकी प्रॉब्लम्स हैं. वहाँ पे हम ऑलरेडी वाटर लॉगिंग और इन सब कैनाल इरिगेशन इन इसकी वजह से ना सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है. दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल. विल स्टडी दैट ऑल्सो आफ्टर दिस. ठीक है, एक रिदम में चलते हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग, एसिडिक सॉइल्स में लिखिए दे फेस सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ, they save severe deficiency of phosphorus, calcium, magnesium, severe deficiency of, here we have severe deficiency of phosphorus, calcium, magnesium, molybdenum, be silent. ठीक है, so these micronutrients, these are largely not present in the acidic soil. There are toxic levels of aluminium and iron. ठीक है, तो इन सॉइल, अगर एसिडिक सॉइल का पूछा जाए तो ये ये कल टेस्ट में था. अगर अच्छा. एसिड होता है तो एल्युमिनियम का कंटेंट बढ़ेगा. अच्छा. वो सही था, मैंने सही किया. ओके, नहीं, एसिड रेन था. वही तो एसिड रेन से होगा तो एल्युमिनियम का कंटेंट बढ़ेगा कि सॉइल में घटेगा. ये क्वेश्चन में था, ये पॉइंट था. ये सही है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है. एसिड रेन विल कॉज लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम इन सॉइल ना. सेकंड स्टेटमेंट वाज राइट. हाँ. उसमें पायरेट हो जाता. पायरेट का रिलेशन मुझे पेपर याद नहीं है तो आई हैव टू सी दैट. तो मैं देख के ऑप्शंस फिर बताती हूँ. ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टीज लिख ली हैं. ठीक है, डाउन देयर ओनली यू हैव टू लिस्ट डाउन द रेमेडीज. राइट डाउन व्हाट विल बी द रेमेडीज. द रेमेडीज फॉर योर एसिडिक सॉइल. तो यहाँ पे एडिंग लाइम, ये ना पूछा है, लाइम के बारे में पूछ लिया है, इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम लाइम यू कैन ऑल्सो यूज, हमने क्या पढ़ा था पहले, बायोचार, वो भी ऐड कर लो यहीं पे ताकि याद रहे. बायोचार और ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने दिया है यहाँ पे, दे आर राइटिंग दैट रॉक वेदरिंग प्रोजेक्ट में ना इवन बेसॉल्ट रॉक पाउडर is effective because of its basic nature. It can correct the acidity problem in the soil. तो यहाँ पे वो भी लिस्ट कर लो, बेसॉल्ट, रॉक पाउडर. तो एक ही जगह पे आपको तीनों ऑप्शंस पता होंगे. एडिंग लाइम मीन्स एसिडिक को ठीक करना है, यू नीड टू न्यूट्रलाइज इट विद द alkaline compounds. So there you either opt for the lime or add biochar or the basalt powder. ठीक है, ये तीनों हो गए. Now come to the basic soils. Sodic soils की प्रॉब्लम की बात करते हैं. अब ये कहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट है? इट इज डोमिनेंट प्रॉब्लम इन द इंडो-गैंजेटिक plains of India. It is more prevalent in the Indo-Gangetic plains, the area where largely first green revolution took place. ठीक है, और यहाँ पे कैनाल इरिगेशन ज़्यादा होती है. So it has high concentration of basic soil. You write here it is having high concentration of the carbonates. It has high concentration of carbonates and bicarbonates of calcium, magnesium, sodium. ठीक है, इसमें जो ज्यादा है वो इसमें ऐड कर देंगे तो इक्वल ही करेंगे, न्यूट्रल करना वही है हमें. वाई दिस pH स्केल, सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड. एसिडिक है तो बेस ऐड कर दो, बेसिक है तो एसिड. ये हमारा केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही करनी है हमने. ठीक है, ओके. नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्लांट ग्रोथ इन द बेसिक सॉइल्स. Nitrogen is a limiting factor for the plant growth in
the basic soils. The sodium in this soil, next point, the sodium in this soil makes it difficult to absorb the water. ये हार्ड वाटर बना देता है, जब ये कैल्शियम मैग्नीशियम ऐड होगा वाटर इसलिए वो कॉम्पैक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, जो सॉइल होगा वो इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा कि वो वाटर रिटेन ही नहीं कर पाता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है कल्टीवेशन में, ठीक है। सो वी नीड टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जिप्सम ऐड करो। व्हाट इज द इट्स रिक्लेमेशन इज पॉसिबल, रेमेडीज में लिख लो। व्हाट आर द रेमेडीज, ऐड जिप्सम एंड सेकेंड पाइराइट, जिप्सम एंड पाइराइट। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जिप्सम और इसके अलावा पाइराइट, ठीक है। सो वी आर डन विद द एसिडिक एंड द बेसिक। ऐसे ही याद रखो, इतना ही याद रखना काफी है। हाउ टू करेक्ट इट, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ दीज, ठीक है। नाउ विल सी another interlinking problem of the soil like we were discussing earlier, which is your salinization of the soil. Let's first of all discuss what can be the causes. Yes, what can be the causes? Means देखो simple, salinization कब होगी, when the salt concentration over the top layer of soil it's accumulating, ठीक है। Now how salts will start accumulating? evaporation का होता है, एक्सेस वाटर यानी कि एरिड क्लाइमेट में दिस इज नेचुरल कंडीशन, वन दैट इट विल बी प्रोमिनेंट इन द arid climate, arid and semi-arid. In the semi-arid climate, where the rate of evaporation exceeds the rate of precipitation. So these salts are not flushed out, rather they are accumulating there. ठीक है, तो ये कैसा है, कौन सा बेल्ट है इंडिया में? जो गुजरात और पंजाब वाले Naturally, if you see the northwest, ठीक है, the desertic region of India, there this will be a natural problem which is prevalent by the virtue of its climate. Other than that, थोड़ा सा पास में जाओ, पंजाब हरियाणा, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो क्या हुआ? Yes, there is over use of water also, यानी कि over irrigation is there. Along with that, there is indiscriminate use of chemical fertilizers. So both of this, that will also increase salinity in the soil. The over irrigation, and along with that you have the use of the chemical based fertilizers and pesticides, ठीक है। Apart from that, और बताइए। Now from here only, remember that when there will be over irrigation and if that water is not flushed out, similar condition will prevail just like your, ठीक है। साइंटिफिकली कौन सा क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सॉल्ट्स ऊपर आने शुरू हो जाते हैं? कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है। देन इफ देयर इज प्रॉब्लम ऑफ स्टेगनेशन इन द वाटर, यानी कि वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। Yes, if we are using saline water for irrigation, if the water which we are using for irrigation that is having salts, apart from that climate change में क्या हो रहा है? Look at the coastal regions, sea level is rising, so there will be penetration of sea water into the freshwater bodies of the coastal areas, ठीक है। Yes, तो वही यहाँ पे हो रहा है, that ground water it's receiving the salt influx from this sea level rise, ठीक है। So another reason is here the sea level rise. So this is summarizing broadly how the problem of salinization in the soils is caused, ठीक है। अब उल्टा कर दो, इसका solutions आ जाएंगे। Solutions क्या है? If there is over irrigation का solution क्या है? Drip irrigation. So what is the solution? Switch to the drip irrigation, ठीक है।
और उसके अलावा वी हैव टू इंश्योर दैट वाटर डज नॉट स्टे स्टैग्नेंट, यानी कि यहाँ पे ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग कैन हेल्प. ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज शुड बी देयर. So these are the solutions. And as far as the coastal agricultural region is concerned, we can make the embankments. मैं गुजरात गवर्नमेंट ने यूज भी सबसे इन्वेस्टमेंट कर रही है जो वॉल बना रही है. Yes, ठीक है. Is it clear? So this is done. इसके बाद क्या है? Okay, some of the initiatives are there. This is just for your revision. और ये आपका पूछा भी हुआ है पहले, climate smart village. क्लाइमेट स्मार्ट विलेज के लिए इफ देयर इज एनी एडिशनल पॉइंट यू कैन राइट डाउन दैट. अच्छा, नेचुरल फार्मिंग में ना एक चीज़ और लिख लीजिए सो दैट वी हैव इट रिटन इन वन प्लेस इटसेल्फ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फुकुओका मेथड. नेचुरल फार्मिंग में लिखना फुकुओका मेथड. तो कंफ्यूज नहीं अगर होना कि अगर ये पूछ लिया आपसे कभी किसी ने. ये एक जापानीज सॉर्ट ऑफ टर्म है जिसमें बोलते हैं डू नथिंग. कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे हैं, स्टिल वी हैव टू मेक एफर्ट्स. अभी मैम ये न्यूज़ में हाँ, दैट इज वाई दिस इज द रीजन आई जस्ट एडेड दिस सो दैट वी कैन हैव ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस. ठीक है. Yes, this climate smart village project, when it was launched, that is not given here, you note it down. It was launched in the year 2011. And you have to pay attention, it is not Government of India's project. ये पूछा था इसीलिए. This is the organization, the Consultative Group on International Agricultural Research. इसका project है ये. The ambition is simply to study the agroclimate of selected villages and accordingly come up with the suitable practices and make the farmers aware and have the technological know-how also disseminated between them. That is basically the objective. तो selected कुछ areas हैं India में. There are some states where it is implemented. As of now 5 states are there: Haryana, Bihar, Punjab, Andhra Pradesh and Karnataka. ठीक है. And other than this, the African countries, they are the focus of this project. वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें इंडिया से लेना देना है. ठीक है. Is it clear? The Global Alliance for Climate Smart Agriculture, that was also asked previously. You can revise from here. अब इन सारे इनिशिएटिव्स में ना एक चीज कॉमन थे कि अभी तक यहाँ तक they were all multi stakeholder in approach. You cannot say any one of them was intergovernmental या फिर solely initiative of one particular UN agency. ठीक है. तो वो आपको याद रखना है. Recent from the current affairs what we have in this regard is your 2 conferences which were held. One India organized and other was under the aegis of UNESCO. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखो. ठीक है. The Global Soil Conference which was held in New Delhi, that was actually organized by India. ठीक है. So here the Indian Council of Agricultural Research, that was also among the organizers. And about this organization you write, it was in coordination with the International Union of Soil Sciences. So write a bit about this International Union of Soil Sciences. One, that it was formed in the year 1924. It is a non-profit scientific organization. Non-profit scientific organization that promotes soil science and its applications. यानी कि soil से related research करना and उसके according recommendations या policies suggest करना, वो काम इसका रहता है. So it can work with various kind of stakeholders as and when required. ठीक है.
Apart from that, remember the theme. This was that caring for soils beyond food security. पूछ लिया नहीं तो एटलीस्ट याद रखो. ठीक है. Next is about another conference regarding the soils. Now this is important because for the first time the World Soil Health Index has been launched. So World Soil Health Index, it has been launched by UNESCO, and when it was launched in July 2024 during this international conference on soils which was organized by UNESCO along with Moroccan government. In Morocco this was taking place. ठीक है. तो जैसे इंडिया का सॉइल हेल्थ पैरामीटर वी हैव डिफाइंड इट एंड वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द सॉइल हेल्थ कार्ड्स. तो एक तरीके से वो भी इंडेक्स है. नाउ ऑन अ पैन स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड it is promoting that all the governments, they should carry out the assessment of their soil, the nutrient level, what is the condition, how much degradation is there, and accordingly it's going to rank the countries. तो वही basically इसका objective है. So we'll see in the future. As of now it says that if we are not able to control the land degradation as it's happening, 90% of the soil will be degraded by the year 2050. अभी 33% इन्होंने अभी स्टैटिक्स दिया है कि उसके अकॉर्डिंग 33% इज थ्रू आउट द वर्ल्ड इट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सॉइल्स फर्दर ऑल्सो. तो ईशा फाउंडेशन ने भी तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया था ना कुछ टाइम पहले, सेव सॉइल. तो अब ये सारी चीज़ों को ना याद रखो, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. इन फ्यूचर इफ यू आर आस्क्ड टू राइट एनी एसे, आजकल एक टॉपिक एनवायरमेंटल डायमेंशन से भी आ रहा है, there you should be able to accumulate all of these, link and then formulate your essay. ठीक है. तो जो भी पढ़ो ओपन माइंड से पढ़ो एकदम. Is it clear? So apart from that, even in the protected areas like the biosphere reserves, UNESCO is having its MAB network, Man and Biosphere program is there, started in 1975. So under that, whatever biosphere reserves are already designated, within those biosphere reserves also quality of soil will be assessed and measures for soil conservation will be promoted. That's again part of this particular initiative only.